click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. One question. Okay. Oh, आपकी आवाज. Correct, bye. Yes, we are taking one question from there. बाहुबली के बाद बाहुबली के पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट. तो हमारे सीईओ साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है. हमको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है. No, it's a phenomenal success. You know, Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है. अब इस फिल्म की ये तकदीर है. इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. कबीर, आपने हिंदी सिनेमा में जो नैरेटिव है वो बदलने की कोशिश की है. लड़का लड़की की प्रेम कहानी से आप पॉलिटिक्स लेकर आए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेकर आए, लेकिन हिंदी लोगों को, हिंदुस्तानियों के फिल्म देखने का पैटर्न है. कम सच नहीं, you take over. दरअसल मुझे बड़ी खुशी है कि दंगल इतनी पसंद की जा रही है चाइना में और दुनिया भर में लोगों ने इतनी पसंद की है. और मुझे लगता नहीं कि किसी दो फिल्मों को कंपेयर करना चाहिए. बाहुबली बहुत ही कामयाब फिल्म है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिससे मैं मिला हूँ सिर्फ तारीफ़ ही सुनी मैंने बाहुबली की. तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से मुबारकबाद राजा मौली जी को, उनकी पूरी टीम को. और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन हमको नहीं करना चाहिए. बाहुबली या दंगल दोनों अच्छी फिल्में अपनी अपनी जगह हैं और दोनों फिल्में हिंदुस्तान की फिल्में हैं जो दुनिया भर में झंडा गाड़ रही हैं. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बाहुबली एज वेल. एंड एज एन इंडियन फैन आई वुड really appreciate the fact that the film is doing so well all over the country, all over the world. Thank you very much, everybody, for being here. All the photographers, I've been made to understand that all of you at the back have won some contest. Thank you, thank you. It's really kind of you to be here and win this contest and get to allow me to see you. So thank you very much. You all look very nice and sweet and handsome. Thank you. I just want to, on behalf of all of you also, to give me this opportunity to meet you. I think what Inox has done all over the country, and we saw parts of it when they had this beautiful, wonderful film. So thank you, Siddharth, and thank you, Alok, and thank you, everybody who's working here at Inox and trying to give you an experience of filmmaking, which is even beyond the film itself. कुछ सालों पहले जब हम फिल्में देखते थे, when I was younger, I remember theaters बहुत ख़राब होते थे और फिल्में अच्छी होती थी. And I'm noticing it here that somehow theaters are overtaking the quality of films now. So thank you for making our films look better, Inox. And this experience itself, मुझे इतना मौका नहीं मिलता. I make films, but I hardly get to see them in beautiful theaters like this. But the Insignia area, the whole entrance, the laser projection, the 3D, the IMAX, so many screens, 9 of them here. I've been made to understand 1,700 people can watch films here on a day. So all this is a fantastic experience, only helps filmmakers to make better films, encourages them to try new stuff. I just saw Despicable Me, I saw Minions, and the other time Dunkirk and Transformers, and I've been... So when such wonderful films are being made around the world, and our own Bahubali, I think it's important that the theaters give you the experience to make the film look even better. So thank you very much, Inox, for having me over here. Thank you, boys and girls, for coming here. And it's really nice to meet you all. And I've been...